So yes, Shalini, first of all, introduce yourself. Good evening, sir. Myself, Shalini. I'm from Bihar. I have done my B.Tech in 2017. I have done my B.Tech in 2021, civil branch from NIT Srinagar. I love to play Kho-Kho and Kabaddi. I have done 2 internships. First one is Haridwar, BHEL, and second one is in NX1 in Noida. And I love to play Kho-Kho and Kabaddi, and my hobby is to listen music and cooking. That's all about me. Okay, and you have interview in which organization? NITIE Bombay. Okay, and Shalini, today you want snap for transportation engineering, right? Yes, sir. Okay, so can you tell me what is the meaning of geometric design? सर ज्योमेट्रिक डिजाइन मीन्स द मतलब जो विजिबल पार्ट होता है रोड का, जो भी हम देखते हैं, जैसे कि उसकी हाइट, कैम्बर, उसमें कितनी सुपर एलिवेशन है, फिर जो भी विजिबल पार्ट है उसकी, वही हो जाती है ज्योमेट्रिक डिजाइन. What is the purpose of providing camber? सर कैम्बर हम मेनली प्रोवाइड करते हैं कि जो भी ड्रेनेज के लिए प्रोवाइड करते हैं, जैसे बारिश वगैरह हो या जो भी किसी वजह से भी मतलब हो, वहाँ पे पानी जमा हो जाए तो ड्रेनेज हो जाए वो इजीली नेचुरली, तो ऑटोमेटिकली वो ड्रेनेज हो जाए पानी. On what basis this camber value is being decided? Sorry sir. On what basis the value of camber is being decided? सर द टाइप ऑफ रोड एंड वहाँ पे कितनी बारिश हो रही है, मतलब हैवी है रेन या लाइट है रेन. Okay, suppose camber value is given to us 2%. Then what did it mean? सर इट इज मतलब कि 50 मीन्स 1/50 हो जाएगा ये, मतलब अगर 50 मीटर लेंथ पे 1 मीटर जो है हाइट रहेगी उसकी. You must heard about रफोमीटर. सॉरी सर. रफोमीटर का नाम सुने हो? नो सर. बम्प इंटीग्रेटर. Yes sir. So can you tell me what is the use of this bump integrator? सर ये मेजर करता है रफनेस ऑफ रोड. Roughness of road. How? सर आई डोंट नो हाउ. Okay. Can you tell me the values which generally we got with the help of instrument are in what unit? नो सर आई डोंट नो. Widening of road is there on the curve part. Yes sir. So what is the purpose of doing what? सर उसके 2 पर्पस होते हैं, एक साइकोलॉजिकल होते हैं, दूसरे मैकेनिकल होते हैं. तो मैकेनिकल इसलिए होते हैं जैसे कि अगर हम टर्न करते हैं व्हीकल को, तो रिजिडिटी के कारण पीछे वाला जो होता है व्हील, वो फर्स्ट वाले को फॉलो नहीं करता, मतलब कर्व को वो फॉलो नहीं कर पाता है, इसलिए हम मैकेनिकल वाइडनिंग देते हैं. और साइकोलॉजिकल वाइडनिंग देते हैं क्योंकि जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ड्राइवर को ये टेंडेंसी होती है कि वो मतलब कि एज के मतलब पास चलने की कोशिश करते हैं. इससे क्या होता है कि कैपेसिटी ऑफ रोड डिक्रीज हो जाती है, इसलिए हम साइकोलॉजिकल वाइडनिंग प्रोवाइड करते हैं. Okay. And generally जो widening हम calculate करते हैं, that should be the value of widening. What do you think? It is provided on the inner side of the curve or outer side of the curve? सर वो जहाँ स्पेस होगी वहां हम प्रोवाइड कर सकते हैं. वाइडनिंग मतलब कि टोटल विड्थ हम निकालते हैं, फिर हमें विड्थ जैसे भी वो जो कन्वेंशनियंस हो तो हम प्रोवाइड कर देते हैं. मतलब अगर हमें आउटर साइड स्पेस मिलता है तो हम सारा वाइडनिंग आउटर साइड कर देते हैं. सर आई थिंक टोटल विड्थ जो हम निकालते हैं वो बेसिकली जो विड्थ हमें प्रोवाइड है प्लस डब्ल्यू कर देते हैं, जो हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग दे रहे हैं, फिर टोटल विड्थ हमारी आ गई तो टोटल विड्थ हम अकॉर्डिंगली कर देंगे. ये ऐसा सर आई मेरा थिंक. क्वेश्चन ये है, यस सर. सपोज फॉर एग्जांपल हमें वाइडनिंग का वैल्यू मिल गया, दैट इज वी गॉट वैल्यू विद द हेल्प ऑफ दिस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग एंड मैकेनिकल वाइडनिंग. Yes sir. And suppose it is coming to be 70 centimeter. Let us take an example. Yes sir. Okay, then what do you think? This widening value is provided on the outer side of the curve, that is your
widening curve from the outer side, or you're widening it from the inner side? What do you think? So I think outer sided. Okay, why you think so? So I think कि मतलब कि जब वो मुझे लग रहा है जब कर्व जाता है, मतलब जब व्हीकल कर्व में जाएंगे तो फिर जो रिजिडिटी होगा तो वो उस टाइम एज पे रहेंगे, तो हम एज ज्यादा, मतलब एज से हम एज को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए हम वाइडनिंग आउटर साइड देंगे। ओके, एक टर्म आता है सुपर एलिवेशन। यस सर। तो क्या आप डिफाइन कर सकते हो कि इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का क्या मतलब है? सर सुपर एलिवेशन जनरली हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कहीं हम ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड कर रहे हैं या सर्कुलर कर्व प्रोवाइड कर रहे हैं, तब हम ये सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ग्रेजुअली चेंज हो। मीन्स जो आए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आए तो वो ग्रेजुअली आए, सडनली ना आए, वरना एक्सीडेंट के केसेस बढ़ जाएंगे। जो भी फोर्सेस आए वो ग्रेजुअली आए, इसलिए हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। नहीं, उस वो ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करने के लिए तो ट्रांजिशन करते हैं ना। सुपर यस सर। एलिवेशन को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करना है, फॉर दैट पर्पस वी हैव ट्रांजिशन करना। यस सर। वाइडनिंग को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करना है, फॉर दैट पर्पस वी हैव ट्रांजिशन करना। यस सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का क्या मतलब है? सर सुपर एलिवेशन ये हुआ ना कि हम हाइट को मतलब इंक्रीज करते हैं, रोड की हाइट को इंक्रीज करते हैं एज कम्पेयर टू लेंथ। कौन सी हाइट को? ट्रांसवर्स हाइट को सर। क्या आप ड्रॉ करके बता सकते हो? यस सर। So I don't know how. Yeah. So this could be the super elevation. Okay, this raised part is what, your outer side or inner side? So I think E equals to total height upon width. That is fine. My question is that ये जो आपने यहाँ पे एक तरफ एज उठाया हुआ है, ये आउटर साइड है कर्व का या इनर साइड है? So outer side, inner side curve. इनर साइड। Yes sir. ओके, फाइन। हमें सुपर एलिवेशन अगर कैलकुलेट करना होगा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ कैन वी कैलकुलेट? सर इसमें हम सबसे पहले वेलोसिटी जो हमें दे रखी होती है, जैसे कि डिजाइन वेलोसिटी दे रखी होती है, तो E इक्वल्स टू करते हैं 0.75 b स्क्वायर बाय RG। यहाँ से हम सुपर एलिवेशन लेते हैं, इसको देखते हैं कि मतलब ये जो है मिनिमम, मतलब मैक्सिमम होता है, E जो मैक्सिमम होना चाहिए 0.07, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो ज्यादा आ रहे तो हम 0.07 कंसीडर करेंगे। ओके, क्या आप बता सकते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल एज पर IRC? सर विड्थ 3.7 3.5 I think. 3.5. Are you sure? No sir. Okay, you must heard about the intermediate carriageway. Intermediate, I heard about intermediate side distance, not carriageway. Okay. Okay, can you define stopping side distance in case of a vertical curve? Yes sir. So this is the side distance by which means vehicle जो है बिना एक्सीडेंट के वो उसको स्टॉप कर ले, मतलब इतना डिस्टेंस होना चाहिए साइड की जिससे वो बिना किसी एक्सीडेंट के कोई ऑब्स्टेकल आए तो व्हीकल स्टॉप हो जाए। Okay. Can you define overtaking side distance in case of vertical curve? सो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होता है कि अगर कोई डिजाइन स्पीड से कोई मतलब व्हीकल चल रही है तो उसको मतलब कि इतना साइड डिस्टेंस होना चाहिए कि वो अपोजिट व्हीकल से बिना किसी एक्सीडेंट के वो पहले वाले व्हीकल को ओवरटेक कर सके। Okay, कोई वैल्यूज गिवन है इसमें? Any values given? सर इसमें ये जो होता है रिएक्शन टाइम ये 2 सेकेंड लेते हैं, और जो ओवरटेकिंग व्हीकल का स्पीड जो होता है वो डिजाइन स्पीड -16 होता है और वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए।
ओवरटेकन व्हीकल या ओवरटेकिंग व्हीकल? सर ओवरटेकन व्हीकल का स्पीड जो होता है वो डिजाइन स्पीड माइनस 16 होनी चाहिए। ओके, यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड है या किलोमीटर पर आवर है? किलोमीटर पर आवर। Okay. We have coefficient of friction and there are two types. One is coefficient of lateral friction and another is coefficient of longitudinal friction. Yes, Can sir. you tell me the IISc given value for the coefficient of lateral and longitudinal friction? Yes, sir. For longitudinal it is 0.35 and for lateral it is 0.15. 0.35. Is there any range given or just we have constant value? What is it? I think constant value, sir. Okay. So what do you think? This coefficient of friction may be lateral or longitudinal. Will they always constant or varies with the speed of vehicle? No, sir. ये situation पे depend करती हैं. Okay. On what basis these values are decided? Sir, I don't know. Okay. Why this coefficient of lateral friction is less as compared to longitudinal friction? I don't know, sir. Okay. You must heard about this rigid pavement. Yes, sir. So how load is being transferred in case of rigid pavement? सर ये कंप्रेसिव लोड लेते हैं, मतलब हम रिजिड पेमेंट में कंप्रेसिव लोड जो होते हैं जो क्रिटिकल लोड कंसीडर करते हैं, और ये ट्रांसफर सर ये मैं भूल गई हूँ। आपने जॉइंट्स इन पेवमेंट सुना हो? यस सर। ठीक है, तो मुझे बताएं कि जो लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं और उनके अक्रॉस जो हम स्टील बार प्रोवाइड करते हैं उस स्टील बार को हम क्या नहीं करते? सर लॉन्गिट्यूडिनली जो हम प्रोवाइड करते हैं वो टाई बार करते हैं, और उनके परपेंडिकुलरली जो करते हैं उनको हम डॉवेल बार कहते हैं। ओके, so why we need to provide this longitudinal joint? सर जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए, जैसे कि अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो पेवमेंट में थर्मल स्ट्रेस आएगा, जिसके कारण थर्मल स्ट्रेन आएगा, जिसके कारण वो कभी कॉन्ट्रैक्ट होगी कभी एक्सपेंशन होगा उसमें, इसीलिए हम ये जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। और इसीलिए मतलब कि उस लोड को फिर जॉइंट जैसे हम गैप दे दिए तो उस लोड में फिर लोड ट्रांसफर करने के लिए हम ये मतलब कि ट्रांसवर्स बार प्रोवाइड करते हैं। ओके, व्हाट डू यू थिंक शालिनी कि अगर हमारा पेवमेंट फ्री टू एक्सपेंड फ्री टू कॉन्ट्रैक्ट है देन थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप करेंगे कि नहीं करेंगे? व्हाट डू यू थिंक? नहीं करेंगे सर। एंड अगर हम थर्मल स्ट्रेन की बात करें तो वो होंगे। क्या आप मुझे मटेरियल के बारे में बता सकते हैं? सपोज हमें एज अ फिलर मटेरियल किसी चीज को यूज करना है to fill the joints, so what should be the specification of that filler material? तो उसमें जो होना चाहिए एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और उसमें स्ट्रेस भी मतलब स्ट्रेस कंसीव मतलब वो स्ट्रेस ले सके, ऐसे होने चाहिए, उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और ये सब दो मुझे दो ही पता है। क्या आप नाम बता सकते हो फिलर मटेरियल का? नो सर, नाम नहीं पता मुझे। Okay. You must heard about the CBR value of the material. CBR, sorry sir? CBR. Yes sir. So can you define what is the meaning of this CBR value? Yes sir. सर सीबीआर से जनरली हम स्ट्रेंथ चेक करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू ऑलरेडी गिवन है कि 2.5 mm के लिए हम जो है 1370 kg लेंगे वैल्यू, और इसको फिर मतलब 2.5 mm के लिए दो है 1370 kg और सेकेंड है 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो 2.5 पे जितनी हमें लोड आएगी वो चाहे स्ट्रेस में हो या मतलब कि ये हो फोर्स हो, इन दोनों मतलब वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे, मतलब जो स्टैंडर्ड जो हमारी प्रैक्टिकली वैल्यू आ रही है P अपॉन जो स्टैंडर्ड वैल्यू दे के है इनटू 100,
तो इसमें क्या करते हैं, 2 पॉइंट पे हम मेजर करते हैं, 2.5 mm पे, दूसरे 5 mm पे, फिर हम दोनों में देखते हैं कि किसकी वैल्यू ग्रेटर है। तो मतलब जनरली होनी चाहिए 2.5 mm की ग्रेटर वैल्यू होनी चाहिए CBR वैल्यू, लेकिन अगर हमें नहीं आ रही है तो हम दोबारा परफॉर्म करेंगे इस टेस्ट को, लेकिन फिर भी अगर 5 mm की वैल्यू आ रही है तो वही हम कंसीडर करेंगे। तो मैक्सिमम इन दोनों में से जो मैक्सिमम CBR वैल्यू आ रही है वही हम कंसीडर करेंगे। ओके, 5 mm पेनिट्रेशन के कोरस्पोंडिंग में स्टैंडर्ड लोड का वैल्यू कितना? सर वो है 2055 kg एंड 105 kg per centimeter square। ओके, ऑन व्हाट बेसिस दीज वैल्यूज आर बीइंग डिसाइडेड? कि जो मेरा 2.5 mm पेनिट्रेशन के कोरस्पोंडिंग में जो लोड है वो 1370 kg है, 5 mm पेनिट्रेशन कोरस्पोंडिंग लोड 2055 kg है। एनी आइडिया? नो सर, इसके आ रही है। ओके, सीबीआर टेस्ट करने से पहले कितने दिनों तक सैंपल को पानी में भिगो के रखा जाता है? सही, ये याद नहीं है मुझे। सीबीआर टेस्ट कोड मुझे बता दें, कौन सा कोड कंफर्म करता है सीबीआर टेस्ट को? नहीं याद है सर। Okay, so Shalini, I am giving you feedback. ओके सर। So, starting from your first question, what is geometric design? So, I'm okay with your answer. So यस all the visible thing that is available on the road surface, whatever you are seeing on the road, that comes under the geometric design part. Okay. यस Camber, okay, again, this is provided for the drainage point of view. So 2% camber, again, okay. So it is kind of a slope, that is transfer slope provided to the road surface. So it is 1 in 50. If you are moving 50 unit horizontals and you have to raise 1 in 5 vertical. Okay, bump integrator, it measures the cumulative vertical undulations. Bump integrator, it measures the cumulative vertical undulations for a given stretch of road. Generally, stretch of road is 1 kilometer. So, what is the cumulative measure of the vertical undulations? Suppose we got a bump of 1 centimeter. After that, we are getting bump of 2 centimeter. Again 1 centimeter. So, ये इंस्ट्रूमेंट क्या करता है? वो सारी वैल्यू को ऐड करता चलता है. So, for 1 kilometer, what is the total BI value in terms of centimeter? Clear? सर बीच में आवाज। Yes, yes. Can you hear me now? यस सर। So it measures all the vertical undulations. That is 1 centimeter plus 2 centimeter plus 1 centimeter up to 1 kilometer road length generally. Okay, on the basis of that, we decide whether the road is satisfactory for the particular speed, or it is unsatisfactory, or it is the good. ओके सर। Okay. So widening generally, okay, widening, what we are doing, we are just increasing the width of the road at the curves. So At the mechanical widening at the curves, यस सर। where we have curves, so we have to do widening. So mechanical widening is there, psychological widening is there. So I'm okay with your answer. Suppose we got some widening value in terms of meter or centimeter, then it is equally distributed on the both sides, outer side of curve and inner side of curve. ओके सर। It is always equally distributed. Suppose if you are working in the hilly region, then we have a kind of the sharp curves. If sharp curves are there, then all the widenings are done on the inner side of curve. In case of sharp curves. So curve is whether sharp or your normal curve, it will decide on the basis of the radius of the curve. ओके सर। Right? So super elevation, what is the meaning of super elevation? So we are raising the outer edge of the road with respect to the inner one. रोड के आउटर एज को हम उठा रहे हैं इनर एज के रिस्पेक्ट में, दैट इज योर सुपर एलिवेशन. बिकॉज एज व्हीकल मूव्स फ्रॉम द स्ट्रेट टू सर्कुलर पाथ, व्हाट इज हैपनिंग, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज टेकिंग प्लेस. ठीक है, अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हो और स्ट्रेट से सर्कुलर पाथ में गाड़ी मूव कर रही है तो आपको लगता है कि आप बाहर की तरफ टिक रहे हो बेसिकली. फॉर दैट पर्पस व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रेजिंग द आउटर एज. So and transition curve is basically for the gradual introduction of the widening, is your super elevation. So many purposes of transition curve are there. Okay, and I asked equilibrium super elevation. So equilibrium super elevation meaning to say that when the pressure on the both the wheels, that is outer wheel and inner wheel, are same, then it is said to be the equilibrium super elevation. ओके सर।
Okay, if we have horizontal or flat, suppose we are not providing the super elevation, then what is happen? Generally, outer wheel having the more pressure or more wear and tear as compared to inner one. But in case of equilibrium super elevation, the pressure on the both wheels are same, or we are not considering the friction value. You can also say that one. Okay, sir. Fine. And maximum width of vehicle as per IRC is 2.44 meter. Okay, Fine. sir. And you said 3.5 meter. I don't know from where you studied this data. It is 2.44 meter. Okay. Right. Yes, sir. And how will you define the stopping side distance in case of vertical curve? When 1.2 meter height driver, that is the eye level of the driver from the road surface as per IRC is 1.2 meter. Yes, sir. जब 1.2 मीटर हाइट का ड्राइवर किसी ऑब्जेक्ट को देख पाए, ऑब्जेक्ट की हाइट है रोड सरफेस से 0.15 मीटर, तो जो डिस्टेंस चाहिए पड़ेगा व्हीकल को इफेक्टिवली रोकने के लिए विदाउट कोलिजन, दैट इज द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस. Okay. Yes, sir. That is the distance required for stopping a vehicle when 1.2 meter height driver can see an object. Object may be stationary or in motion, having height from the road surface is 0.15 meter. Okay, sir. And if we talk about the overtaking side distance, and 1.2 meter high driver can see another 1.2 meter high driver effectively, so that if there is an emergency of like we have to apply the brake, the sufficient distance will be available on the road. Okay, sir. Okay, and coefficient of lateral and longitudinal friction value generally ranges 0.35 to 0.4. Yes, sir. Coefficient of lateral friction is generally less as compared to longitudinal because chances of toppling of vehicle are there. गाड़ी पलट सकती है ना, अगर मान लो जिस स्पीड के साथ गाड़ी स्ट्रेट पाथ में है और वैसे ही वो सर्कुलर कर्व को ट्रैवर्स करे तो गाड़ी के पलटने के चांसेस बहुत ज्यादा है. Yes, sir. इसीलिए फ्रिक्शन को कम कंसीडर किया गया है, ऑल्दो प्रैक्टिकली फ्रिक्शन हो सकता है इससे ज्यादा भी. Okay, sir. लेकिन we want to be in safer zone, that's why its value will be less. Okay, sir. And how load is being transferred in case of rigid pavement? The answer is with the help of the slab action. Yes, sir. Okay. And what I asked regarding the joints, if we talk about the filler material to fill the joints, then fiber boards are there, plastic pad are there, so they can compress 50% of their thickness. Okay, sir. Okay, generally thickness of this mastic pad is 20 mm. Practically thickness of mastic pad is 20 mm. Okay, sir. Okay, and CBR, if we talk about the standard load value 1370 and 2055 kg for the 2.5 mm penetration and the 5 mm penetration value, so these standard load values are given for the crushed stones. Crushed stone. हमने स्टोन क्रश किए थे, उनके ऊपर हमने जब प्लंजर से लोडिंग अप्लाई की थी, प्रैक्टिकली शायद नहीं, बीइंग सिविल इंजीनियर 2.5 mm पेनिट्रेशन आपको करवाना है प्लंजर का, और लगभग आप 1.5 टन का लोड लगा रहे हो, तो मिट्टी के अंदर ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि 1.5 टन का लोड लगा और प्लंजर सिर्फ 2.5 mm पेनिट्रेट करे. ठीक है, तो ये जो वैल्यूज गिवन है स्टैंडर्ड वैल्यू, दीज आर गिवन फॉर द क्रस्ड स्टोन. हमने सॉइल को कंपेयर किया है स्टोन के साथ, क्रस्ड स्टोन के साथ. ओके, और जनरली ये टेस्ट करने से पहले सॉइल सैंपल को या जो भी मटेरियल है उसको 4 दिनों तक पानी में भिगो के रखा जाता है, 4 days के साथ में. Okay, sir. Clear? So Yes. anything else Alka you want to ask? Sir, MUTI की variation, friction coefficient in lateral direction, उसकी Okay. variation. जो वेरिएशन होता है वो वेलोसिटी के साथ, स्पीड ऑफ व्हीकल के साथ वेरी करता है. जैसे कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन है, इसका जो रेंज है 0.35 से 0.4 है, IRC गिवन. Okay, sir. Okay, but as the speed of vehicle increases, this coefficient of friction decreases. Sir, लेकिन MUTI ये होता है ना सर, रिलेशन MUTI plus E equals to V square by RG. Okay, you are asking for the super elevation.
नो सर, आई एम आस्किंग लाइक कि यहाँ पे तो म्यूटी फॉर्मूला में मतलब प्रैक्टिकली हमें समझ आ रहा है कि म्यूटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी से, लेकिन एक फॉर्मूला है ना म्यूटी प्लस ई इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर जी, तो इसमें लग रहा है ना कि म्यूटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है। आप मुझे फॉर्मूला बताओ कहाँ लिखा है आपने। सर ये होता है ना म्यूटी प्लस ई अपॉन 1 माइनस म्यूटी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर जी। आप मुझे बताओ ना आपने क्या फॉर्मूला लिखा है, लिख के अच्छा, मैं बताओ। यू हैव पेपर पेन। ओके सर। सही है। Is not clearly visible to me. So this formula is for what? Even this is not visible to me. So ये सॉरी सर। फॉर्मूला आपने किस चीज के लिए लिखा है? No. Yeah. Okay. Yes. Yes. I can see this one now. V square upon RG equal to mu TE upon mu T plus E upon mu 1 TE. माइनस म्यूटी ई, यस सर। Okay. ये फॉर्मूले से आप क्या बताना चाह रहे हो? सर मैं ये बोल रही हूँ प्रैक्टिकली तो समझ आ रहा है कि वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट डिक्रीज होगी, लेकिन इससे नहीं लग रहा है कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब v नहीं, इंक्रीज ऐसा होगी तो कभी ये मतलब ये डिजाइन करना पड़ेगा म्यूटी ज्यादा। नहीं, डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। इवन आईआरसी ने ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कंसीडर करी है, दीज आर कंसीडर्ड ऑन द वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो। रोड के ऊपर मड है, फुली सुपर एलिवेशन इज देयर, जितनी भी वर्स्ट कंडीशन है आईआरसी ने वो वर्स्ट कंडीशन कंसीडर करने के बाद ही ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कंसीडर करी है। हो सकता है प्रैक्टिकली हमें फ्रिक्शन ज्यादा मिल रहा हो, दैट इज गुड थिंग, बट वी वांट टू बी इन सेफर जोन। ओके सर एक्चुअली मैं वो नहीं बोल रही थी, आपने ये बोला ना कि जैसे कि वेलोसिटी ये जो है ये फ्रिक्शन की वैल्यू वेरी करेगी, जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होंगे म्यूटी की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो इसीलिए मतलब मैंने ये फॉर्मूला मतलब बोला। नहीं, ऐसा तो आप बताओ कैसे हो सकता है? सर प्रैक्टिकली तो समझ आ रहा है, लेकिन यहाँ आप पे मतलब थ्योरेटिकली भी यही पे है ना, सेम थिंग इज इन योर थ्योरेटिकल। सर थ्योरेटिकल तो v बढ़ेगा तो म्यूटी भी बढ़ेगा। आप ना मुझे वो फॉर्मूला शेयर करना बाद आफ्टर स्नैप। ओके सर। ओके, सो आई विल टेल यू कि आपने इसमें क्या चीज पढ़ी है और वो क्या लिखा है। ओके सर।